Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, as we know that deposit growth during this year is much lower as compared to the preceding year. As per RBI data, this growth is 10.1% as against last year growth of 13.8%. Now, some of you have asked, sir, what can be the possible reason for lower growth? So there is no official reasons are available for this, but we can see some possible reasons that might have contributed to the lower growth in deposit, and this is based on my own assumptions and presumptions that I am discussing here, and these may be contributor to this because these are the factors that ultimately are responsible for growth in deposits. So first is this year we observed lower GDP growth. That means lower economic activity. And whenever economic activity is lower, that means income generated is also lower. Though there is always possibility that the people, those are saving the money, might not be in position to save more money. That may be one possible reason for lower growth of deposits. Second is continuous selling by FIIs. During the entire year, FIIs sold their shares. So ultimately they have withdrawn the money from the country, and this also makes lesser available cash in the hands of investors. So the partially some people are meeting their expenses from the profits from the capital market and partially from other incomes. So when profitability from capital market falls, naturally some of them might have drawn their past savings, or they could have saved lesser money that might have resulted into lower growth of we can say deposits. That is one can expect. Second, throughout the year, liquidity deficit was there, and the system was in liquidity deficit till 28th March 2025. And due to that, even the credit growth was also lower as compared to preceding year. So credit growth was just 11%, whereas in the preceding year it was 19.7%. So whenever credit growth is lower, it also results into lower deposit growth, because loan taken by one person may be deposit for another person if he makes the payment by raising the loan. So whenever we see lower credit growth, it also results in lower deposit growth. This is normally seen in every economy. Then another reason can be lower disposable income in hand of people. When inflation is high, so the entire year we have seen high inflation. The rise in prices was high. So whenever the country passes through high inflationary period, in those periods also the disposable income, out of disposable income, the portion of savings also comes down. Because on one hand, they may be having disposable income which may not be higher due to lesser employment. On the other hand, due to high cost of goods, they might have spent the more money out of disposable income, ultimately resulting into lesser money available in the hands of people to save. So that is one possible reason. And this is also said by some people that many young people, they preferred stock market over the bank deposits. So some you can say diversion of money from bank deposits to stock market has also taken place,
but whether that ultimately result into lower growth in deposits, that is a debatable thing. Some people say it may result, some people say it may not have effect. Ultimately money remains in this system. So this may be one reason. Another important thing is, as far as younger generation is concerned, they are tend to save less. This is a normal phenomena seen, that the younger generation is more, you can say, believes in spending. They may be utilizing more and more credit cards, and then they have to repay it every month. So ultimately resulting into lower savings in their hands. This may be one reason, that is, some people say. Another aspect some people say is lower employment. As the employment has not grown substantially throughout the year, so the number of people getting the income might not have added so much, and ultimately resulting into lower growth in deposit. So these are some possible reasons what I could see, because some of you have asked me, sir, tell what can be the reason for lower growth. Still, banks are trying to devise their ways and means to boost the deposit growth. Let's see what happens during this calendar year. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस साल जो डिपॉजिट ग्रोथ हुई है बैंकिंग में, वो 10.1% है, जबकि पिछले वर्ष ये 13.8% थी। तो ये लोअर ग्रोथ हुई है, लगभग 3.7% लोअर हुई है। परसेंटेज में तो देखेंगे तो 30% के करीब हम कह सकते हैं कि लोअर है। ग्रोथ है बट लोअर है, ये चीज़ हमें समझनी है। तो लोअर ग्रोथ के कारण क्या हो सकते हैं? आप में से किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकते हैं? इसमें कोई ऑफिशियल अभी रीजनिंग नहीं सामने आई है, मगर जो मैं अपने एक्सपीरियंस से जान पा रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। और ये इनमें से अधिकांशतः कारण होंगे। पहला कारण मुझे लगता है कि जो जीडीपी की ग्रोथ में गिरावट आई है, कम हुई है जो जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी जो पिछले साल बढ़ी थी। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब लो होती है तो नेचुरल इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी भी घटी होगी और अल्टीमेटली सेविंग्स पे प्रभाव पड़ा होगा, और उसकी वजह से डिपॉजिट ग्रोथ कम हुई होगी। दूसरा कारण ये देखने में आया कि एफआईआईज ने कंटिन्यूस सेलिंग करी है। जब वो यहाँ से पैसा निकाल के ले गए तो नेचुरल है किसी न किसी के अकाउंट से तो वो पैसा गया है। तो अगर वो पैसा कंट्री से बाहर गया है तो जो अवेलेबल कैश बैलेंस है एग्रीगेट लोगों के बीच, वो भी घटा होगा, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया एसेट में। पैसा निकल गया, उसके बदले उन लोगों के हाथ में आ गए शेयर्स। तीसरा क्या है कि जो पूरी की पूरी सिस्टम के अंदर, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डिफिसिट रहा पूरे साल, और ये लगभग 28 मार्च 2025 तक रहा। 29 मार्च के बाद बार बार आरबीआई ने इंटरवेंशन करके इसको सरप्लस में कन्वर्ट किया, मगर पूरे साल लिक्विडिटी डिफिसिट रहा। और लिक्विडिटी डिफिसिट होने के कारण बैंकों ने जो क्रेडिट ग्रोथ है उस पर भी प्रभाव पड़ा, और जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो सिर्फ 11% हुई पिछले साल, जबकि उससे पिछले साल ये 19.7% थी। तो जब क्रेडिट ग्रोथ लोअर होती है, वो भी एक कारण बनता है डिपॉजिट ग्रोथ को नीचे लाने के लिए, क्योंकि जो मनी क्रिएशन का फार्मूला है उसमें ये होता है कि जब बैंक क्रेडिट देते हैं वो किसी न किसी बैंक का डिपॉजिट बनता है। तो जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ गिरती है वैसे वैसे डिपॉजिट ग्रोथ गिरती है, और जब डिपॉजिट ग्रोथ गिरती है तो क्योंकि क्रेडिट देने का पैसा कम होता है बैंकों के पास, तो वो क्रेडिट ग्रोथ पे भी असर डालता है। तो ये एक दूसरे को असर डालते हैं। तो लोअर क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि लिक्विडिटी टाइट थी, वो भी एक कारण डिपॉजिट ग्रोथ के अंदर गिरावट का हो सकता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो अवेलेबल मनी फॉर सेविंग है वो भी लोगों के हाथ में गिरी है, क्योंकि जो डिस्पोजेबल इनकम भी गिरी, प्राइजेस हाई होने की वजह से उसमें से अधिकांश पैसा खर्च हो गया चीज़ों को खरीदने में। तो जो एवरेज पर्सन है
उसके पास जो हाथ में सेविंग बची, जो वो बैंक डिपॉजिट की शेप में रखता है, वो भी पिछले साल में ऐसा लग रहा है घटी है, क्योंकि पूरा साल हाई इन्फ्लेशन का रहा है और उस रफ्तार से इनकम नहीं बढ़ी है लोगों की। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो यंगर जनरेशन है उसमें पैसा बचत करने की हैबिट उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि ओल्डर जनरेशन के अंदर थी। तो वो भी एक कारण बन रहा है कि जो अभी यंग जनरेशन है उनका जो माइंड सेट है वो अधिक से अधिक पैसा खर्च करने की है, वो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू अधिक से अधिक खर्चा कर देते हैं और जैसे ही इनकम आती है वो क्रेडिट कार्ड में ही पेमेंट्स में निकल जाती है, ईएमआईज में निकल जाती है। तो सरप्लस मनी उनके हाथ में बचता ही नहीं है। तो वो जो सरप्लस मनी नहीं बच रहा है वो भी डिपॉजिट ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी टाइट रही है थ्रू आउट द ईयर। अगर देखें जैसे आईटी सेक्टर काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, बैंकिंग काफ़ी को देता है, इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवेज़ हैं, इन सभी सेक्टर्स में हम देखें जो पिछला साल गया है उसमें जो नंबर ऑफ पर्सन्स जिनको जॉब मिली है वो कंपैरेटिवली लेस है उसके प्रीसीडिंग ईयर के। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या आंकड़ा है मैं नहीं जानता हूँ, पर जो विजिबल हैं, जो हमें सामने नज़र आ रहे हैं, जिन सेक्टर्स में दिखता है इतने इतने लोग चले गए हैं, तो जितने अभी आईटी के डेटा भी आए हैं उसमें भी देखा है कि सभी ने बताया कि बहुत कम स्टाफ एडिशंस हुआ है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ से काफ़ी अच्छी सैलरीज लोगों को मिलती आ रही थी पिछले कई सालों में। तो वहाँ पर भी अगर खिंचाव आया है तो वो डिपॉजिट ग्रोथ पे ज़रूर असर डाला होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।